Hello everyone. So, India's proper Test cricket summer, we can say a little bit only South Africa is there to play the Test matches. Only two Test match series is there. So, the first Test match is at Kolkata, and a lot of positive things are being said for the Test match. Like it will be a sporting wicket, like a proper Test match wicket, like the Kolkata curator has said. There will be fast bounce, then turn, and proper carry and everything. So, in the panel we have got Anup Konnur sir, and in the below there's Ayan Chatterjee and Ayush Shekhar. So Anup Konnur sir, like no one is counting on South Africa, but they are the defending champions of WTC. We should not forget they won the WTC match against all odds. No one expected them. It was all about India, Australia, or any other team, or New Zealand, somewhat like. But South Africa, they are the defending champions. They won a test match in Pakistan. Pakistan also the ball turns a lot. Like it's not like easy to score runs, especially for the overseas countries, the Western countries. But still, like India is only the favorite. It is being said. But if a competitive wicket is there, no, South Africa will be in the game because they have the fast bowlers, they have the spinners, they have the all rounders. So it's going to be quite a what to call a good exhibition of Test match. What do you say, Anup sir? Yeah, no doubt South Africa are the means reigning WTC champions. They beat Australia to get that coveted match back in 2025 cycle. But sir, if we look at that cycle in overall, South Africa were maximum playing two tests everywhere. And they won, their percentage were highest. That's the reason they went to the final. And in final, in one of match, they beat the bigger teams like Australia. Now that's why I am saying this, because when here in the last cycle too, which Asian teams did South Africa played? South Africa, I just played only Pakistan. That was in their own condition. That was in South Africa, and they played against West Indies. Then West Indies was in West Indies only. So in Asian conditions, I feel, and at that purpose, I would say that last time हम बहुत जन इन्होंने ये बात भी की थी साउथ अफ्रीका फाइनल तक तो पहुंचा है, पर कौन कौन से टीम तो हाराते पहुंचा था वो टीम देखने लायक थी, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम ने अपनी पूरी सी टीम भेजी थी, तो मेन प्लेयर खेल नहीं रहा था, जिससे साउथ अफ्रीका सीरीज जीती। और फिर सेकेंड टीम थी पाकिस्तान, तो वैसे ही उनका तो पता ही है कि उनका मतलब टेस्ट स्टेटस इतना नीचे जा चुका है कि कोई भी टीम उनको हरा सकती है। तो पाकिस्तान वाज ओनली वन प्रॉपर टीम एंड ऑस्ट्रेलिया बारिन। उसके अलावा कोई बड़ी टीम ऐसी नहीं थी जो लास्ट साइकिल में साउथ अफ्रीका के सामने आ गई। सो सेइंग दिस, अभी आप बोल रहे होती, नो डाउट इस साइकिल में वो पाकिस्तान चले गए थे, वहां 1-1 सीरीज ड्रॉ करते आ गए, एशियन कंडीशन में अच्छा खेला। बट अब जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन प्लेइंग टर्म्स में कर रहे, देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लेइंग कंडीशंस एज वेल ऑफ द बोथ टीम्स और प्लेइंग टेम्परामेंट ऑफ बोथ टीम। इंडिया टीम पाकिस्तान से मच ज्यादा इम्प्रूव टीम है। और अभी जो नया लॉट जो भी खेल रहा है, आई वोंट से नया लॉट, एक्सपीरियंस लॉट है, इंग्लैंड में दो दो सीरीज ड्रॉ करते आया है। वेस्ट इंडीज नो डाउट सेकेंड टेस्ट में उन्होंने दिल्ली में अच्छा फाइट दिया था, 2-0 करते इंडिया ने वो टेस्ट सीरीज भी जीती है। सो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली अपने दर पे द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उभरते सामने आई थी। एंड नो डाउट साउथ अफ्रीका विल पुट अ ग्रेट फाइट, एवरीवन आर एक्सपेक्टिंग साउथ अफ्रीका ते इंडिया तो एज तक ढकल दे दोनों टेस्ट में। इट वोंट बी लाइक अ वन साइडेड टेस्ट मैचेस लाइक वेस्ट इंडीज, तो बिल्कुल नहीं होगा। दोनों टेस्ट 5-5 दिन तक जाए, जो होने की संभावना है ड्यू टू बैड लाइट कंडीशंस इन कोलकाता एंड गुवाहाटी एज वेल। But South Africa will push India. It will test India's metal also. ऐसा नहीं थी इजी विन उनको थाली में परोसते इंडिया तो भी मिलेगी। बट ऑन पेपर अगर देखा जाए ना, साउथ अफ्रीका एट द मोमेंट आई वुड से, मतलब अगर जीतने के चांसेस दे तो इट्स 70-30 फॉर इंडिया। 30% दे रहा हूं मैं साउथ अफ्रीका को, क्योंकि पता नहीं कौन सी साउथ अफ्रीका वापस फील्ड पे उतरेगी। क्या अभी जो प्लेइंग 11 भी अगर हमने देखा तो उनमें से सिर्फ दो तीन प्लेयर्स है जिनको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, जैसे कि एडन मार्करम है, टेम्बा बहुमा देयर कैप्टन,
थर्ड इज तदीसो रबाडा एंड मार्तो एंसन टू सम एक्सटेंट। बाकी सब प्लेयर्स नए हैं और उनको इंडिया में इतना खेलने का एक्सपीरियंस नहीं। केशव महाराज का भी ऐसा है कि उसका इंडिया में इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने उसने खेला जरूर है प्रीवियस, दैट्स व्हाई ही वाज रेयरिंग टू दो। उसने प्री कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि मैं आई एम eagerly to ball on Indian wickets and take more wickets. No doubt he's the number one spinner in the world. बट इंडिया के सामने वो तैसा परफॉर्म करता है, इंडिया में अभी तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। एंड रेस्ट ऑल प्लेयर्स आर रिलेटिवली न्यू, लाइक द लाइट्स ऑफ वियान मुल्डर, काइल वेरेन्ने। दो फॉर साउथ अफ्रीकन टीम दे आर ए सेटल्ड टीम, बट इंडियन कंडीशंस दे काइल वेरियन, ट्रिस्टन स्टब्स और ये सब आईपीएल खेलना अलग बात होती है, टेस्ट में जो टेम्परेमेंट वो अलग बात होती है। सो ट्रिस्टन स्टर्ब्स, काइल वेरन ने, ये साइमन हार्मर जैसे स्पिनर या सेनुरन मुत्थुस्वामी, इनके लिए ये पहला पहला टूर है इंडिया का। एंड सीन ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग, क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलिंग तो भी इतनी मदद नहीं होती। मैक्सिमम विकेट्स विल बी टेकन बाय द स्पिनर्स ऑन द ग्राउंड। फास्ट बॉलिंग 20 से 20 विकेट ले ले ऐसा इंडिया में होने नहीं वाला, जो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में होता है। वहां स्पिनर्स तो कोई मदद नहीं मिलती, पर इंडिया में देखा जाए तो स्पिनर्स विल हैव अ लॉट ऑफ से। एंड कंपेयरिंग इंडियन स्पिनर्स विद साउथ अफ्रीकन स्पिनर, ओनली केशव महाराज हैज द पोटेंशियल टू सरप्राइज इंडियन बैटर्स। इंडिया के पास रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर माइट प्ले बिकॉज वो आप टेस्ट में ऑलमोस्ट सेटल्ड हुआ है, वो है, और कुलदीप यादव वुड बी द चाइनामैन फॉर इंडिया। सो उस हिसाब से इंडियन बॉलिंग अटैक लुक्स मोर पोटेंट देन साउथ अफ्रीकन। और तदीसो रबाडा है, एक्सपीरियंस है, पर वापस हमने बहुत बार देखा है कि टेस्ट मैचेस में भी Yeah, तदीसो yeah, you रबाडा can say. नो बॉल बहुत डालता है। मतलब उसमें फ्री हिट नहीं होता इसलिए बच जाते हैं, पर इतने तो ओवर में 7 रन रेट से तो वो रन्स भी दे सकता है टेस्ट मैच में, इतना वो कंसिस्टेंट है नहीं। सो लेट्स सी हाउ दे प्ले। आई एक्सपेक्ट देम टू पुट अ फाइट एंड माय वर्डिक्ट, जैसे आप बाद में लास्ट में वर्डिक्ट पूछेंगे, पर अभी से मैं बता रहा हूँ, मैं इंडिया तो 70% दे रहा हूँ। ओनली द एडवांटेज की होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं, और ये दो टेस्ट मैचेस अगर जीत जाते हैं तो डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स में इतनी ऊपर छलांग लगाएंगे जो उनका एडवांटेजेस होगा जब वो आधे न्यूजीलैंड में टफ तौर पे जाएंगे न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। वो मैं Yes, बोलने जा रहा yeah, हूँ। yeah. तो वो एडवांटेजेस होगा, और इसलिए इंडिया वुड लव टू सील दिस 2 मैच सीरीज 2-0। हो नहीं पाएगा, बट एटलीस्ट विल लुक टू विन 1-1 करते सीरीज ड्रॉ करने का भी तो सोचे थी इंडिया। वो मेरा टेक है। हाँ। Yeah, y- you spoke a lot about the points. I was just talking very brief and thing. No doubt, South Africa didn't play that many nations, quality nations, but India played against South Africa in South Africa. That series was one all, and that one New Zealand tour they had to flown. That all the star players were not there. Still, they made to the finals. We should not forget that. No, I completely agree. They played against Pakistan. They played against Bangladesh, West Indies. Give them the credit. They defeated Australia. It wasn't easy. That Australian side was a full-fledged one. No one expected. Babuma had this self-belief marker up that partnership had. Give them the credit. They're the defending champions. And also the second test match of Pakistan South Africa was quite a interesting one. Like Rabada scored that 60 or 70 runs something, and then only the score happened. Like the batting is new with your Torin Dizorzi and Temba Bahuma and everything. But Ayan, we will first come with you. What's your take? Like, look, New Zealand, even without Kane Williamson, defeated us by 3-0 last year, just when the Diwali was about to there and everything. This side has got the players. Like, I'm telling you why. Only one reason they chased 417 against India's full-fledged bowling lineup. That was an intra tour game, which we say no. They chased was 470. It's a very big number. It's not 370 or 320. They have come to a clear plan, and with a sporting wicket, it's not going to be easy. And I just don't understand. You can answer it later. Like why Dhruv Zurel is playing, why you're not playing a proper batter, someone like Sarfaraz Khan. So because Rishabh Pant is now back, why two wicket keepers? What is this logic? I just don't understand. Your take, Ayan. Yeah. Yeah. So basically, I'm expecting a very good series between India and South Africa. I mean, no one is going to. I mean, India, yes, maybe they're playing at home. Maybe they'll start as little favorites. That's for sure.
But you cannot count out South Africa. They are coming with a plan. And as you said, I mean, let's not forget, India has a tremendous home record. But under the great coach Gautam Gambhir, India lost to New Zealand 0-3. They got whitewashed. Why did they get whitewashed? Two reasons. One was overconfidence. Second reason was preparing rank turners. And that is the reason why for this home series that you saw against the West Indies and also you see against South Africa, India won't prepare rank turners. Because if you prepare rank turners, you might get the opposition in trouble, but your batters might also struggle. And that has been seen for India. So that's why no rank turners. We're preparing a sporting pitch. Eden Gardens pitch will have first 2 days, will have normal pitch, maybe a bit of help for the Pacers initially, but then it'll be a good batting surface. And from day 3 onwards, I think we're expecting turn to come in. Having said all that, you cannot take South Africa lightly. I mean, look at the South African team. 3 quality spinners, in my view. Of course, it doesn't compare to what India has, but still, I mean, Sarudan Muthuswamy, Simon Harmer, and Keshav Maharaj. I see all 3 of them playing tomorrow, by the way. I see all those 3 spinners playing tomorrow, along with Marco Jansen and Kagiso Rabada. I'm just a bit skeptical about South Africa's batting in the middle order. I mean, yes, Aiden Bakram is there. He's doing a job. Ryan Rickelton is there. There's Bavuma. But there is some muddle that can really hamper them, I feel. Tony Dezorzi, Vian Mulder, I know who will play. We'll have to find the playing 11 tomorrow. But these are the players that can create trouble for them side, and India might take advantage of that. So that the batting, I think the batting middle order, little bit of a concern, but not much. Little bit. As far as India is concerned, you asked about the Indian 11. Dhruv Jurel is playing on the basis of form. I mean, he scored 200s against South Africa. The game that he spoke about, India versus South Africa, that 417 chase, Dhruv Jurel scored 132 in the first innings and 127 in the second innings. And both innings he was not out. And let me not remind you, in the West Indies series, when he was playing as a proper keeper and Rishabh Pant was not playing, Jurel had 100 in Ahmedabad. So he's carrying good form. And then Nitish Kumar Reddy has also been released to play the A game, ODI. So he has been released on the squad. It has just been done to accommodate Jurel. So they'll go with Jurel at number 6, I think. And because Pant bats at number 5. So they'll back Sai Sudarshan, you know, because you need to back somebody at number 3. Number 3 is not like, oh, come on, let's go, let's send this one, let's send that one. It doesn't work that way. So number 3, they'll stick with Sai Sudarshan. Number 4 is Gill, of course. Number 5, Pant. They'll go with Dhruv Jurel at 6. I think the Jadeja will bat at 7. And I think Washington Sundar bat at 8. And Kuldeep Yadav will be 9. And you'll have the 2 paces in Bumrah and Siraj. Akashji, despite being a local lad, might miss out this game. Yes, so this is the playing 11. The Indian playing 11 is I'm really going to be intrigued about South Africa's playing 11 because I told you about the 3 spinners and 2 paces I'm expecting. I'm expecting Markram. I'm expecting Rickelton, Bavuma, I think Tony Dezorzi, but the few spots, Kyle Venene will play, of course, he's the keeper. Very nice, yeah, so I don't know who, so it's going to be a good game, I think. Toss factor, don't ask me about toss. I expect South Africa to win the toss and bat. Early prediction, I don't see India winning the toss. There is Shubman Gill, Surya Kumar Yadav, doesn't matter who's the Indian captain or even Harmanpreet Kaur for that matter, they don't win tosses. So I don't expect India to win that's another part. That's another story. Yeah, so it's good if we win the match. Losing the toss is okay for India then. Nobody. Saying so, Dhruv Jurel, he has scored 5 centuries in the last few couple of first-class matches. So he is the player in form, and secondly, Nitish Reddy, he had a net sprain. That's why he was out of Australia ODIs as well. I completely agree. Australia series as well, and today he is playing for India A versus South Africa. I mean, she is very much in the picture for the white ball series, ODI series, after in nets, because Shreyash Iyer is a question out there. Shreyash Iyer won't play that another series. Part we will talk about. And that's the reason, my telling is that's the reason as Nitish Reddy goes out, there is one automatic veteran place in the Indian team, which Dhruv Jurel on form will automatically, and also ऐसा है कि ऋषभ पंत अभी इंजरी से आया है, and if you have noticed second unofficial test में उसको थोड़े से वापस problems injuries से आए थे, so he went inside, he came outside and then scored a half century in second innings. तो अगर ऐसा अगर नौबत आ जाए तो ध्रुव जुरेल can wicket keep also in the match, तो वो double advantage तो होगा.
KL Rahul is also there. Give him the gloves. Hey, come on, KL Rahul, do the wicket keeping. No, no, Do no. it. Rahul won't don the gloves. He is a slip fielder. ध्रुव जुरेल will be the proper दिवा मैंने इंग्लैंड की तरह नहीं होता कि ऋषभ सिर्फ बैट करेगा ध्रुव बॉल है सिर्फ टिपिन करेगा No, दे sir, ध्रुव will we also will get talk a chance about to that. bat as My well as main play. question is not about that one. My simple thing was that why you not have a proper batter who has He scored is a tons of proper runs. batter. He is a proper batter. Dhruv Every, Jurel. everyone is a proper batter. Even Washington Sundar is a proper batter. I'm not going into And that. Sai Let Sudarshan, me let after 87 versus West Indies and 50 odd versus England in England, the Indian team is batting Sai Sudarshan at number 3 at the moment. And that also keeps the left and right hand combination intact in the top I'm six also. I'm not saying about that. My only thing is that you can have a proper batter. No, Lord, Dhruv Jurel has scored tons, 5 centuries and everything. But if Rishabh Pant is not 100% fit, then why you are playing him? That also remains the question. Like why there is so much obsession? Like he could have taken a break. That's another thing. So आयुष शेखर आपको क्या लगता है मतलब हल्के में लेना सही रहेगा क्या साउथ अफ्रीका जो सफारी वी कैन से साउथ अफ्रीकन सफारी the kinds of people there Bavuma is the first black captain right South Africa has ever had there was no black captain there and also he has ICC mace we should not forget man रिस्पेक्ट हो रहे ऐसा करो मत रे बेचारे जीते मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था व्हाट यू से तो वो कहते हैं ना, गधा पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन अपने अंदर ये भ्रम मत पालो कि साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना है। क्योंकि पिछले साल हमारी टीम ने न्यूजीलैंड को हल्के में लिया था, नतीजा क्या निकला? 3-0। तो इस बार वो गलती वो नहीं दोहराएंगे कि साउथ अफ्रीका को हल्के मिले। हाँ, इंडियन का सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में, एशियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में साउथ अफ्रीका या फिर कोई भी सेना कंट्री स्ट्रगल तो करते हैं। अभी ताजा ताजा ये लोग 1-1 की सीरीज 1-1 की बराबरी पे आए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। वो कंडीशन अलग था, ये कंडीशन अलग है। और उनकी बॉलिंग ऐसी है कि कभी भी आपको मैच भी जितवा देगी, कभी भी आपको मैच फंसवा भी सकती है। लेकिन इंडियन बॉलिंग सेटअप में ऐसा नहीं है। उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, बॉल से भी अच्छा कर लेते हैं। हमारे पास भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और कल वाले मैच में आकाशदीप का होना जरूरी है, क्योंकि अभी आकाशदीप इसी कोलकाता में ही था, रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था, तो उसको बराबर ये कंडीशन पता है, तो उसको एटलीस्ट खिलाना चाहिए। और इस कंडीशन से यूज टू हो गया है। तो आकाशदीप के साथ या तो डीएसपी सिराज खेलेगा या बुमराह। तो और ये आपका अभी बुमराह का क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 खेल के आ रहा है। तो मैं जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस के साथ बुमराह को खिलाएंगे। अगर वो नहीं खेला तो डीएसपी सिराज खेलेगा। अब विकेट कीपिंग का सवाल है, तो ऋषभ पंत कितना फिट है ये देखने वाली बात है। क्योंकि ऋषभ पंत का ऐसा है कि अंधाधुंध बल्ला चलाएगा सामने। ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकता, लेकिन वो अंधाधुंध बल्ला भी चला सकता है। तो हल्के में तो कतई नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि माना कि साउथ अफ्रीका एक अनबीटन साइड है जब से टेम्बा बबूमा कप्तान बना है। लेकिन आपको भी अच्छी फाइट देनी पड़ेगी। वो तो देंगे ही देंगे, आपको भी देना पड़ेगा। और यस साइमन हार्मर की 8 साल बाद वापसी हो रही, इसी कंडीशन में खेल चुका है। खेल चुका है वो तो है लेकिन इन 2000 I guess it was in 1919 in that two test match series which South Africa lost 19 by में आया था three साइमन हार्मर। Simon Harbour 3-0 in South Africa had lost that test series. It was quite a hammering. Faf du Plessis was the captain. There was no senior player, no seniority that much. So Abhijeet, our last man in the standing, we can say, Abhijeet is looking like very eager to go to Kolkata tomorrow, where Anup sir is there. Watching the match. So Abhijeet, like no one is talking that much of Mohammad Shami, yeah, because see Abhishek Nair has spoken, even Ganguly, everyone has said like it looks like the management, the selection panel have moved on. But even in the press conference, Shubman Gill was asked, but Shubman Gill said that the current crop of players have done a lot to not to drop them. So I guess it's a Tata bye bye of Shami because Kabir doesn't like him. Because I'm telling you one reason.
It might be. I'm not 100% sure. When that Champions Trophy 2025, all that happened, Gambhir was very angry when he asked that even India playing all matches in their home conditions of Dubai only. And Shami said it is beneficial. He said he backed the statement of the media and everything. That might be the reason because after Champions Trophy, our Shami hasn't played. He didn't play the IPL. We also don't know what happened and everything. But I guess we have lost our last gem because there was a three to four players were there. I would say Bhuvneshwar Kumar, Ishant Sharma, and Shami. These three and Umesh Yadav. These four players, it was a four quartet, proper quartet. Shami was the last one because now it's all about Bumrah, that Prasiddha Krishna, Siraj, and everything. A new crop of bowlers. They also have done the well. But do you think is this the end of the road for Shami, Abhijit? It's a really interesting question because I didn't because I've been thinking about it, and uh, uh, players like Mohammad Shami can never go unnoticed. In this situation, जो situation चल रही है, जो अभी टेस्ट क्रिकेट टीम जो अभी फॉर्म भी हुई है, उसमें आकाशदीप जैसे प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिल रहा है, जिनका रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा स्कोर है, जिन्होंने उस मतलब लोकल बॉय हैं वहाँ के, फिर भी उनको जगह नहीं मिल रही। पर मोहम्मद शमी का जो इन्वॉल्वमेंट 2023 वर्ल्ड कप में या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो रहा है, उसको वो अननोटिस नहीं जाएगा। जब आई आई थिंक शमी कम बैक कर सकते हैं, बट थोड़ा क्योंकि ये अब प्रॉब्लम यही ना कि इतनी पैक्ड टीम है, इतनी बैलेंस टीम है, बॉलिंग यूनिट इतनी सॉलिड है, जसप्रीत बुमराह, डीएसपी सिराज, और मतलब उसके बाद एक थर्ड स्पेसर के लिए जगह बनाना, वो भी मोहम्मद शमी को इंट्रोड्यूस करना, अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना, अभी ऑस्ट्रेलिया अभी टेस्ट क्रिकेट भी इतना नहीं खेला है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट अभी थोड़ा, ये भी मैं कहूँगा बहुत प्रीमेच्योर होगा। इसलिए अभी थोड़ा अगर उनको बाई चांस इंक्लूड भी करना है, तो आई गेस उनको आईपीएल में एक तो आने वाला जो है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, अगर उनको वर्ल्ड कप में या फिर 2027 ओडीआई No, वर्ल्ड he's कप। playing Ranji Trophy. Ranji Trophy has taken 15 wickets as well in two matches, three wicket haul, four wicket haul, and then uh, he is doing his work. But वो कहते हैं ना, एक बार मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया नहीं लेना है, we won't want to. That's it. You do what you take hundreds of wickets. Well said, but I think we will see some of Mohammad Shami soon, very soon, because I'm having feeling कि मतलब कि गौतम गंभीर उनको इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे, बस इन क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम ना, मतलब जब एक्चुअल में जब जसप्रीत बुमराह, डीएसपी सिराज और जो मोहम्मद शमी की जो बॉलिंग यूनिट बनेगी, ये बहुत इफेक्टिव रहेगी तीनों दोनों वर्ल्ड कप्स के लिए जो आने वाले हैं। तो लेट्स सी अब क्या होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद शमी का जो टॉपिक है बहुत क्रूशल है, और उनको मतलब आप ईशांत शर्मा और मोहम्मद भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बाकी बॉलर से ज्यादा रहा है। तो आई Yes. थिंक अभी और भी है इन्वॉल्वमेंट, अभी और आएंगे शायद से, अभी और चांस भी मिलेगा, एंड वी विल सी हिम वेरी सून। बट अगर जब जो अब नेक्स्ट जो कल मैच होने वाला है टेस्ट मैच, तो आई थिंक उसमें पैक्ड है पूरी बॉलिंग, वहाँ आकाशदीप को जगह नहीं मिल रही, तो मोहम्मद शमी के तो आप रूल आउट ही कर दो उस ओपिनियन से ही। तो लेट्स सी, कल का मैच भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपका कंपटीशन है, वो टीम एडन मार्करम, केशव महाराज ऐसे ऐसे ब्रिलियंट पेस के साथ अभी Yeah, इंडियन yeah. सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होने वाले हैं। तो आई थिंक लेट्स सी क्या होने वाला है, बट एक चीज है जो शायद से मैं एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न रहेगा, जो गौतम गंभीर बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, चाहे ओडीआई हो टेस्ट क्रिकेट हो, जो रीशफलिंग चलती है जो बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर्स में, वो बंद हो जाए। वो नहीं चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। No. टेस्ट क्रिकेट को नहीं, टेस्ट जो में तो ऑर्डर्स प्रॉपर मेंटेन होता है है, वैसे। टेस्ट में तो चेंज नहीं करता वो। No. No, तो you never know. पता You नहीं, never आई know. डोंट नो, अगर बाई चांस नहीं, कुछ वो भी हो सिर्फ सकता है, वनडे बट और इसलिए T20 बैटिंग में ऑर्डर करते हैं, We टेस्ट में have नहीं time करता। limit here. We have time limit. But I would like to tell you one thing. Ishant Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav, all these three can still play. Huh? They are not 40 plus or anything. They are 35, 33, 34 or into that range. But our former head coach Saab, I will tell his name officially because he's a very good person. Rahul Dravid had said we have moved on from him. And now I guess some sort of communication has been done with Shami that we have moved on from you. And yes, if India has so much power, what do you call boldness, flamboyancy, we can say, that drop Dhruv Junaid, Washington Sundar is there.
as your spin bowling all rounder. Bring in Akashdeep. Go in with three fast bowlers, three spinners. Go in with five, six combination. But you won't do that because you won't take that risk, and it's also not a good option as well. But that's why Akashdeep will have to sit. It's not necessary, yeah, because of combinations and everything. But I'm telling you, Kolkata, Eden Gardens, because Ayan is from Kolkata and our Anup sir is already there in Eden Gardens. It's right there, but still he's there in the day zone. There's no doubt about it. But I'm telling you, this is going to be proper test cricket because see, one reason I will say South Africa's head coach is a proper character, Shokri Conrad. No one gives him the credit because he was the one who took South Africa to the final. Everyone ignores the importance of the head coach. Like, what does the head coach do? It's all about the players. No, head coach and player, it's like a very good relationship, bond one. Bavuma often takes the names of Shukri Conrad. Like, he brought the best out of every one of us. It's important. He has said one thing: just go out there and play yourself. Don't think too much because in India you have to win sessions by sessions. So let's see how it goes at first test match, Eden Gardens. Two test match series only. My appeal to our Mr. Jay Shah, please make it three test matches from the next cycle. Don't keep it two. It looks very boring to watch two test match series. So let's see if it happens three test match series. And yes, new ICC WTC is also going to be introduced on the next cycle. 12 teams. Let's see how it goes at. So thank you, Ayan and Anup sir, and all the four aces of my video, Abhijit and Ayush as well. So we'll be back with the post-match analysis also, and also with something extraordinary happens on days as well. We'll be back with the post-match coverage as well, and also the go worldwide. We'll be covering lots of content day in day out of this. So thank you everyone. Good night, everyone. Not night still now, but you can relax. Thank you.